हाय एवरीवन वेलकम बैक टू सालेम फ्रेंड्स। आज आम डिस्कसन करवा आपणकर इकोनॉमिक्स ऑनर्स 5 सेमिस्टर रो आपणकर यूनिट 1 रो सिलेक्टिव क्वेश्चन सेटा पुणी 2-3 मार्क रो क्वेश्चन एवं आंसर है। तो भिडियोटी को जदि चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेट कर दिखाँ जहाँफल आगे एमती लाटेस्ट इनफॉरमेशन वीडियो सर्वप्रथम ये चैनल पाइपर। देखु फ्रेंड्स आपणकर जो अच्छी एग्जाम आपण पाखे आसला तेणुक मुझे भिडटी बनई आपण को आणुची आपण पिला माने जोटा पढ़ी पारे है आपण सिलेक्टिव क्वेश्चन आपणकर आंसर सहित आनी कौन सब क्वेश्चन रही देखु देखु फास्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी मनी वैल्यू कौन है in the words of Crowther, the value of money is what it will buy। आम जो गोटे जिनिस किणवाई जो भैल्यूटा दे सेटा हूँ वैल्यू ऑफ मनी है। the amount of goods and services received in exchange for a unit of money constitutes value of money है। आम गोटे जिनिस गोटे द्रव्य बा जो गोटे सेवा आम उपभोग करने को चाहूँ तार प्रतिबदल आम जो टंका दूँ ताकू आम वैल्यू ऑफ मनी कह जहाँ मूल्य दूँ ताकू आम वैल्यू ऑफ मनी कहवा है। तापर अच्छी आपण सेकेंड नंबर रे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द value of money and general price level of goods and services। When the general price level falls, the value of money rises। Value of money is equal to 1 by P है। आपण को जो जनरल प्राइसटा जिते बेले फॉल्स हेसी तल को हुए सेते बेले वैल्यू ऑफ मनी आपण को राइजिंग हुए है। एवं वैल्यू ऑफ मनी रो जो सूत्रटा रही हाफ 1 बाय पी कह जाए है। थर्ड रे देखिए आपन को 3 नंबर रे स्टेट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एटी आंसर रे अछि आपनकर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कौन है। अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दैट इज ए डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल एंड an inverse proportionate relation between quantity of money and value of money। आपन को मनी क्वांटिटी ऑफ मनी और जनरल प्राइस लेवल भितर जो इनवर्स प्रोपोर्शनेट रिलेशन अच्छी क्वांटिटी मनी एवं वैल्यू मनी भितर ताहाकू आपन को सेटा हूँ आपन को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। जहाँ रिलेशन अच्छी दी थ्योरी टेल्स दैट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहे यह व्याख्या करी जे एवरी इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी देयर इज प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। आपणकर क्वांटिटी ऑफ मनी जिते बेले एवरी इंक्रीज आपण गोटे स्टेप भी जदि इंक्रीज है गोटे लेवल भी ताहले आपण क्वांटिटी ऑफ मनी सेटा भी इंक्रीज हम प्राइस लेवल सहित है। 4 नंबर देखिए आपणकर आशा करुँची बुझी पारे जोटा बुझी न पारे कमेंट करेंगे। 4 नंबर देखिए आपको व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी कौन वेलोसिटी ऑफ मनी इज नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट ऑफ मनी buys goods and services in a given time। आपण को गोटे समय दि जाइए आपण को से समय भितर जो जिनसटा किणवे आपण को हैंस ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड आपण को गोटे जो दबा नबा आपण को गोटे जिनिस आनिबा समय जो टंकाटा दि जाए जो प्राइसटा दि जाए से रिलेशनटा को वेलोसिटी ऑफ मनी कह जाए है। आपण को जो टाइमटा रही यूनिट ऑफ टाइम आपण को जो रही ताकू आपण को वेलोसिटी ऑफ मनी कह जाए। मनी चेंजेस समय जो
टाइमटा रही यूनिट ताकू वेलोसिटी ऑफ मनी कह जाए है 5 रे दीजिए आपन को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड index number. In simple index number, all times of the series are accorded equal weightage. आपन को simple index number रे कौन हुए समस्त द्रव्य सीरीज हिसाब रे आपनकर इक्वाल वेटेज आपनकर समान वेट रो होई थाए हला एवं whereas ये weighted index number different item are accorded weightage according to their importance. आपनको weightage जो रही according तार गुरुत्व हिसाब रे आपनको different होई थाए आपनको weighted index number different item are accorded weightage हला what is meant by index numbers. Index numbers are statistical devices which help in the measurement changes in economic variable from time to time. Index number statistical device which help आपनको जो इंडेक्स नंबर अच्छी जोटा कि आपनको स्टैटिस्टिकल डिवाइस को हेल्प करे मेजरमेंट चेंज करबा पई एवं इकोनॉमिक्स वेरिएबल समय अनुसार टाइम टू टाइम इन अदर वर्ड्स by index number we mean the statistical measure with the help of which relative changes in economic variables such as price in other words by index number which mean the statistical measure with the help of which relative changes आपनको जो इंडेक्स नंबर होइछि स्टैटिस्टिकल मेजर्स आपनको जो रहिछि जहाँकि आपण को हेल्प रिलेटिव चेंज आपण को जो संपर्क रही इंडेक्स नंबर रे स्टैटिस्टिकल मेजर रो आपण को सही संपर्क को ही रिलेटिव चेंजेस इकोनॉमिक आपण को इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज रे हो किंबा सच एज प्राइस इनकम प्रोडक्शन एक्सेट्रा आज आदि रे आपण को जो चेंज हुए एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी मेजर्ड से टाइम को आपण को मेजर करे हला सेटा को आपण इंडेक्स नंबर कह जाए आशा करछि बुझी परथिबे बुझी न पारले कमेंट करिवे हला व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स नंबर व्हिच मेजर्स द एवरेज change in prices paid by the specific class of consumer for goods and services consumed by them in the current year in comparison with base year. आपन को जो goods and services जो consume करा जाए आपन को हला सेटा जो प्राइस दिया जाए आपन को एवरेज चेंजेस आपन को प्राइस रे जो दिया जाए आपन को सॉरी आपन को जो सुध गोटे प्रकार सुध आपन को जो दिया जाए आपन गोटे द्रव्य किणिले आपन से प्राइस को से द्रव्यर मूल्य आपन को गोटे ईयर पर आपन जदि दउछंती ताहले आपन को प्राइस रे किछि चेंज रहउची कि आपन सेटा को आपन प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कह जाए सॉरी इन प्राइस पेड बाय द स्पेसिफिक क्लास आपन को गोटे प्रकार रे गोटे श्रेणी रे आपन को जो कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम दिया जाए तांको द्वारा जो अणा जाए सही ईयर रे कंपैरिजन विथ बेस ईयर आपन को बेस ईयर जो रही ताको आपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कह जाए इन अदर वर्ड्स चेंज इन द प्राइस लेवल affects the cost of living of the concerned class of consumer आपन को प्राइस लेवल रे चेंज हेले से आपन को जो कंज्यूमर रही तांको ऊपर कौन प्रभाव रहुची से ऊपर आपन को ध्यान दिए अकॉर्डिंगली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस आर आल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्सेस आपन को मूल्य हला क्रय मूल्य सहित समान सॉरी consumer price indices are also called cost of living indices हला
ह्वाट तापर रही ह्वाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स आपण WPI है यहाँ रही आपण दि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI मेजर्स दि रिलेटिव चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज आपणकर होलसेल प्राइस इंडेक्स हूँ आपणको रिलेटिव चेंज आपणको जो संपर्क चेंज प्राइस कमोडिटी ट्रेड भितर आउ होलसेल मार्केट रे आपणको जो प्राइस कमोडिटीज को ट्रेडर करे ताहाको आपणकर होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाए हला इन इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन वीकली बेसिस आपणको होलसेल प्राइस आपणको गोटे जिनिस किणिले आपणको गोटे बड़ दुकान रो आपणको होलसेल दाम रे आपणको मिली पारिबो किंतु आपण जदि छोट दुकान रे घिनिचंती गोटे दुईटा कपड़ा घिनिचंती ताहाले आपणको अधिक दाम रे किनिबाकू पड़िबो तापर रही आपणको डिफाइन डिमांड फॉर मनी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला द क्वांटिटी ऑफ मनी demanded in the economies is the amount of money that the people want to hold during given period of time आपनको जो डिमांड फॉर मनी रहिला सेटा आपनको गोटे ग्राहक बा गोटे पीपुल रो गोटे लोकर आपनको ड्यूरिंग गिवन पीरियड रे से अमाउंट कौन रही से आपनको टंकार जरूरी कौन रही सेटा होची आपनको डिमांड फॉर मनी जहाँ चाहिदा मुद्रास्फीति सॉरी according to Lipse and Crestall the amount of wealth that everyone in the economy wishes to hold in the form of money balances is called demand for money हला तापर दुई रे रही what is classical approach of demand for money according to classical approach Fisher's equation आपनको एग्जाम रे आसी पारी आपनको क्लासिकल अप्रोच लिखा ही थाई पारे किंबा फिशर इक्वेशन ऑफ डिमांड फॉर मनी आपनको क्वेश्चन रे आसी पारे प्रायतः आसे डिमांड फॉर मनी MD इज ए फंक्शन को एफ ऑफ इनकम दैट इज MD इज इक्वल टू F into Y हला जहाँ जोटा कि MD होची डिमांड फॉर मनी एवं Y होची इनकम हला इट इज द वॉल्यूम ऑफ इनकम दैट डिटरमाइन ट्रेड ट्रांजैक्शन हला 3 नंबर रे कोन रही देखंतु 3 नंबर होची व्हाट इज न्यू क्लासिकल अप्रोच ऑफ डिमांड फॉर मनी मार्शल्स हैज प्रेजेंटेड न्यू क्लासिकल इक्वेशन इन द फॉलोइंग मैनर M is equal to KY when here M is equal to demand for money, Y is equal to national income, K is equal to that part of national income which people want to hold as cash आपनको cash रे जोटा रहूची हला thus even according to new classical approach demand for money is a function of income हला demand for money is a function of income according to new classical approach हला 4 रे दिछि what is transaction motive of demand for money transaction motive is taken as the function of income thus LT is equal to FY हला where here LT is equal to transaction demand for money, Y is equal to income. There is direct relationship between money and demand for transaction purpose and the level of income. तापर रुचि what is precaution sorry एटा आसीबनी एग्जाम रे प्रायतः आसेनी speculative motive for demand of money देखो speculative demand for money refers to demand for cash balance for purpose of investment in the money market implying the purchase of bonds or related financial assets
Speculative demand for money is a function of rate of interest. LS is equal to FR. हाँ तापर रही 7 व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी प्रेफरेंस यहाँ आसीला गत थर एग्जाम रे आपनकर लिक्विडिटी मीन्स कैश आपनकर लिक्विडिटी रो अर्थ होची कैश हला अकॉर्डिंगली लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स प्रेफरेंस फॉर कैश आपनकर प्रेफरेंस फॉर कैश होची आपनकर लिक्विडिटी प्रेफरेंस रो अर्थ हला थस से प्रोफेसर मेयर्स liquidity preference is the preference to have an equal amount of cash rather than claims against others. Hala. What is meant by real balance effect? Real balance mean the real purchasing power of the stock of cash holding of the people. When the price level changes, it affects purchasing power of people cash holding, which in turn affected the demand and supply of goods. This is real balance effect. Real balance effect आपनकर जो कौन सी गोटे द्रव्य वा सेवा आपनकर जदि चाहूचंती आपण वांट करचंती नीड करचंती ताहले आपनकर जो से समय रे आपनकर जो पावर थिबो आपनकर हाथ रे जो होल्डिंग कैश होल्डिंग आपनकर हाथ रे जो थिबो आपनकर पाखरे आपनकर मनकर आपनकर गोटे जिनिस किणवार अछि गोटे जामा किणवार अछि आपनकर से जामार दाम होछि आपनकर 500 टंका किंतु आपनकर पॉकेट रे केवल 200 टंका अछि ताहले आपनकर जो डिमांड रहिछि आउ सप्लाई रहिछि गुड्स रो ता ऊपर किछि प्रभाव पड़ुछि एवं आपनकर जो बैलेंस रहिछि सेटा होछि आपनकर बैलेंस इफेक्ट हला जो आपनकर जो टंका को जो इफेक्ट पकोछि सेटा होछि आपनकर बैलेंस ऑफ इफेक्ट रियल बैलेंस इफेक्ट नेक्स्ट आपनकर देखि देखो डिफाइन मनी सप्लाई of money refers to the currency with the public demand deposit and time deposit आपनको currency with the public demand deposit time deposit आपनको जो समय अनुसार आपनको डिपोजिट हुए किंबा डिमांड डिपोजिट हुए जो दरकार थिबो आपण डिपोजिट करबार थिबा आपनको ताको मनी सप्लाई कहा जाए हला some economics of the present era include in the supply of money besides money all those assets which are its near substitute like bonds share etc. According to Milton Friedman, money supply should also include saving and term deposit besides currency in circulation and demand deposit. टू रे दीची आपन को व्हाट इज क्लासिकल व्यूज ऑफ मनी सप्लाई. According to classical economists, two elements are included in the supply of money, that is legal money or currency that includes coins and notes. Demand deposit. Second is demand deposit in the bank that can be withdrawn through checks. आपन को चेक्स हिसाब से जोंटा विथड्रॉ ही पारे एवं जहाँ आपन को लेगाल मनी जोंटा कि आपन को करेंसी बा कॉइन हिसाब से आपन को जहाँ मिली पारे विथड्रॉ ही पारे सेटा को आपन को दुई भाग रे विभाजित करा जायछि आपन को मनी सप्लाई हला. थस सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू currency plus demand deposit of banks आपनकर supply of money. तापर देखि what is Friedman views on money supply. According to Friedman, money supply should also include saving time deposits. आपनकर Friedman's view अनुसार आपनकर money supply होछि आपनकर इंक्लूड सेविंग एंड टाइम डिपोजिट आपन को फिक्स डिपोजिट जाको कहा जाए आपन को सेटा को बुझा जाए बोली कहते फ्राडमैन. तापर इट इज सो बिकॉज
savings and time deposit can easily converted into currency or demand deposit ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସେଭିଙ୍ଗସଟା ରହିଛି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ଟା ରହିଛି ଇଜିଲି କନଭର୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କ କରେନ୍ସିରେ ହେଲା ତେଣୁକରି ସେ ସେମିତି କହିଛନ୍ତି Thus, supply of money is equal to currency plus demand deposit plus time deposit. Primarily, money views of money supply होची आपणकर currency plus demand deposit plus time deposit. होला तापर होची आपणकर 4 नंबर रे what is Golle and Shah view on money supply एठी रही state that money should include all those things which are its close substitute money should include beside currency demand deposit its close substitutes like time deposit saving bank deposit instrument of credit shares bonds etc all these assets have the quality of liquidity like currency तापर 5 नंबर देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय मॉनेटरी बेस consists of total banking reserves and currency held by the public. Monetary base means cash or the supply of available funds used as reserved by the central आपन को सेंट्रल बैंक हिसाब जोटा कि सेंट्रल बैंक द्वारा आपन को कैश एवं कैश सप्लाई हुए आपन को फंड्स रो अवेलेबल फंड्स रो जो सप्लाई हुए ताकू आपन को मॉनेटरी बेस कहै supply of money expands with the increase in the size of the monetary base and contract with the decrease in the size of the monetary base 6 रे होची आपन को व्हाट इज मीन बाय मनी मल्टीप्लायर कोन आपन को money multiplier is the ratio of change in supply of money to the change in monetary base monetary base हिसाब से जोटा आपन को सप्लाई ऑफ मनी चेंज हुए ताको आपन को मनी मल्टीप्लायर कहा जाए it can be expressed in the form of the following equation m is equal to mh here m is equal to capital M is equal to supply of money small m is equal to money multiplier and h is equal to monetary base or high power money होला तापर होची व्हाट इज मीन्ड बाय मनी काहकु कहै money is defined as anything acceptable in payments of goods and services or in settlement debt आपन को कौन सी द्रव्य विनिमय रे आपन को जो मूल्य देवा को आपन को मनी कहा जाए हैला some economists define money as anything which performs the function of money in either medium of exchange measure of value and store of value हैला आपन को जो माध्यम एक्सचेंज रो विनिमय रो माध्यम जहाँ एवं जहाँ गोटे द्रव्यर मूल्य को माप करे हला ताहाकू आपन को मनी कहा जाए बोली आपन को इकोनॉमिस्ट माने डिफाइन देइचंती आपन को सजेस्ट देइचंती आपन को संज्ञा देइचंती अकॉर्डिंग टू आरपी कैंट money is anything that is commonly used and generally accepted as a medium of exchange आपन को जो टंका रही मनी सेटा आपन को कमनली आपन साधारणतः व्यवहार करा जाए एवं बहुत सरल उपाय रे आपन को व्यवहार होई थाए हां 2 नंबर रे रही व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ money has distinct characteristics that separates or distinguish it from other assets. These are as under liquid. 1 is liquid asset, 2 is general acceptability, 3 is voluntary acceptability,
এবং 4 ଦେଇଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଆପଣଙ୍କ ଏହିସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମନିର। ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ୱିଡ଼ିଟି ଏସେଟ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଏସେଟ୍? ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ। Liquid asset is an asset that can be easily exchanged for the goods and services. Liquid asset is an asset. Liquid asset एमती गोटे एसेट जहाँकि इजिली आपणकर एक्सचेंज कराए आपणकर कौन द्रव्य किंबा सेवा विनिमय रे। कैश इज ऑब्वियसली द मोस्ट लिक्विड एसेट। आपणकर लिक्विडिटी एसेट गोटे उदाहरण होची आपणकर कैश। व्हाट इज मीन्ड बाय द बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? द बाटर सिस्टम ऑफ exchange refers to that system of exchange where goods and services are exchanged for each other for mutual satisfaction of human wants. आपनकर जो मानवीय अभाव रही सेटा को जो पूरण करने को आप कौन द्रव्य विनिमय आपको जो सब आपण जो मूल्य दे था जो प्राइस बा भैल्यू दे था आपण ताको आपणको बाटर सिस्टम एक्सचेंज कहा जाए। द वर्ड्स इन द अदर वर्ड्स आरपी कैंस बाटर इज इन द वर्ड्स ऑफ आरपी कैंस है। आरपी कैंस कौन कहते बाटर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी एज ए मीडियम एक्सचेंज। हाँ विदाउट मनी रे आपण जोटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज करती आपण माध्यम जो रही विनिमय कौन द्रव्य विनिमय रे आपण मनकर आप कौन द्रव्य विनिमय रे आपण जदि एक्सचेंज बदल आप गोटे द्रव्य देते ताको आपण बाटर एक्सचेंज सिस्टम कहा जाए। 5 नंबर दीजिए व्हाट डू यू मीन बाय कमोडिटी मनी? When money takes the forms of a commodity with intrinsic value, it is called commodity money. Many goods have been used as money in the history of exchange. Salt, cattle, horse, tobacco, shells, and arrowhead may be cited as some example. 6 देखिए आपणकर 6 में बैक पेपर मनी आप फ्रैक्शनली बैक पेपर मनी कौन? व्हेन रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एग्जांपल गोल्ड्स है जो रिजर्व सुरक्षित संरक्षण हो रही है ऑफ द नोट इशूइंग बैंक आर लेस देन द क्लाइम्स इन द फॉर्म्स ऑफ पेपर मनी। इट इज known as fractionally backed paper money है। तापर in the modern time all the paper money is fractionally backed। 7 नंबर कौन देखिए देखो explain the meaning of near money. Near money refers to those assets which cannot be used immediately to buy goods and services। आपन को near money आपन को एमती गोटे एसेट्स से एसेट्स गुड़ी को आपन को डायरेक्ट इमिडिएटली जहाँ बाय कर पारना कौन सी गोटे द्रव्य को इमिडिएटली द्रव्य बा सेवा को इमिडिएटली बाय कर पारना बट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी वेरी इजीली। किंतु ताहा आपन को से द्रव्य को मनी रे आपन को वेरी इजीली कन्वर्टेड कर पारे without much loss in their values। without any loss आपन को जो वैल्यू रही से कमोडिटी रो आपन को सेटा को इजीली कन्वर्टेड कर पारे इनटू मनी ताको आपन को नियर मनी कहा जाए। इन दी वर्ड्स ऑफ DSE एंड स्टेनियर नियर मनी मे बी डिफाइंड एज फाइनेंशियल एसेट दैट adequately fulfill the store of value function and are readily converted into medium of exchange
are not themselves a medium of exchange ହେଲା। What is quasi money? Quasi money refers to those financial assets which have some of the attributes of money and fulfill some of its function but not well enough to be considered as money. For example, a postal order may be used as a medium of exchange and perhaps also as a store of value, but its usefulness as such is limited. Other example would be gift voucher, lunch cost voucher, etc. What is mean by actual money? It refers to that money which circulates actually in a country. It serves as a medium of exchange, measure of value, and store of wealth. In India, all coins in the forms of rupees and paisa and currency notes of different denomination in circulation constitute actual money. Benham refers to this kind of money as unit of currency, and Seligman calls it real or concrete money. 10th is commodity money. What is commodity money? It is that money which intrinsic value is equal or most equal to its face value. ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ କମୋଡ଼ିଟି ଭ୍ୟାଲୁ କୁହାଯାଏ, କମୋଡ଼ିଟି ମନି କୁହାଯାଏ। କଏନ୍ସ ମେଡ୍ of gold or silver or any other metal whose intrinsic and face value are almost equal are called full body coins ହେଲା। तो यही थिला आजिर भिडियोटी भल लगे भिडियोटी गोटे लाइक करेंगे। भिडियोटी लंबा हो जाइए तेणुक क्षमा करेंगे। यहाँ लेगाल टर्म मैंने आप पढ़े आउ तीन टा मोस्ट इम्पोर्टाट आप पढ़ी ने है। भिडियोटी भल लगे भिडियो को लाइक करवा सह चैनल को सब्सक्राइब करदे। आपको एमती भिडियो देखापी धन्यवाद। आपको देखाबा पुणी गोटे भिडियो से बेल पर्यंत विदाय दिंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय श्रीराम।